हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर सरोसस क्लासेस। और आज हम लोग करने वाले हैं ISIM मैथ सब्जेक्टिव पेपर का फाइनल क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर आपको इस पिछले जो वीडियो हमने डाले हैं उसमें कोई डाउट है, अगर आपको क्लासेस चाहिए हमारे तरफ से, अगर आपको डाउट क्लियर करना है, अगर आपको PYQ चाहिए, अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए, सो डायरेक्ट आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप करिए। सौरभ सर खुद हिमसेल्फ आपको इस व्हाट्सअप में रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को तो सभी को तो पता ही है ISI के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट हम लोगों ही है, क्योंकि हम लोग डिटेल सॉल्यूशन करके ही स्टूडेंट लोगों को भेजता है, स्टूडेंट लोगों को हेल्प के लिए। ठीक है, सो शुरू करते हैं आज के फाइनल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, लेट स्टार्ट। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? लेट x, y बी अ मैट्रिक्स स्पेस एंड f डिफाइन x to y बी अ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर में क्या बोला गया है? इफ f is continuous and k is compact subset of x, then prove that function of f belongs k to y is defined by if subscript k defined k to y is defined by if k of x equals to fx comma x belongs to k is continuous. If fk is a continuous for all the compact subset k of x, then prove that f is continuous. तो फर्स्ट पार्ट में ये प्रूफ बोला गया है और नेक्स्ट पार्ट में ये प्रूफ बोला गया है। So we will address this problem into two parts. In part A, f is continuous and k is compact subset of x, so we can prove if k defined k to y is defined by if kx equals to fx for all x belongs to k is continuous. So we can prove this problem in part A. Restriction of f. In first point we can tell the restriction of f. f का restriction क्या है? The function fk is the restriction of f to the subset k. Formally यहाँ पर क्या है? fk is the restricted of f to the subset of k. Formally fk defined k to y is defined as, so कैसे हम डिफाइन करेंगे इसको? डिफाइंड करेंगे डिफाइंड एज f of f belongs k of x, if k of x equals to fx for all x belongs to k. Okay, and the next point is continuity on k. To show fk is continuous, we need to show that for any open set, we need to show that any open set v subset of y, then the perimage of if k inverse of v is open in the
सबस्पेस किस में ओपन है, सबस्पेस K में. And the third point is pair image in X note that if K inverse of B equals to क्या होगा, X belongs to K, define if K of X belongs to V and equals to X belongs to K, define if X belongs to V. Okay, and the next part is if inverse of V intersection K. Okay, this is the pair image in X. And the fourth one is open set in subspace topology. Open space in subspace topology. Since F is continuous, F inverse of V is open in X. Okay, F inverse of V is open in X, and the intersection of an open set in X with K means a subspace of X, is open the subspace topology on K. The intersection of an open set in X with K का मतलब subspace of X is open in the topology K. Okay, and the fifth one is conclusion part. Therefore, if K inverse of V equals to F inverse of V intersection K is open in K. Okay, so implying that Fk is क्या है, Fk is continuous. Okay, so we can prove the first part, and next part is if K is continuous for all compact subset of K of X, then prove that F is continuous. So how can we prove this part B? In
first we can prove the continuity criterion So what is the continuity criterion? We need to show that for any x, we need to show that for any x belongs to capital X and any v is a subset of y containing fx. So there exists an open neighborhood. There exists an open neighborhood U, the subset of x such that f of u is a subset of v. Okay, and the next part, compactness of neighborhood closure. What is the of let x, small x belongs to capital X, and V be a open set in Y containing fx. So consider Y containing in fx. So consider a closure ball consider a closed ball B of x comma delta around x sum delta greater than 0. So the closure of B x comma delta is denoted by B bar B of x comma delta is compact. इसमें कॉम्पैक्ट है, x में कॉम्पैक्ट है. सो क्लोजर B ऑफ क्लोज्ड बॉल B ऑफ x कॉमा डेल्टा को कैसे क्लोजर में रिप्रेजेंट करेंगे? बार B ऑफ x कॉमा डेल्टा. सो in the third point, continuity on compact set. Since closure of B comma delta B of x comma delta is compact, f of B x comma delta is continuous by assumption, is
continuous by assumption. And the fourth point is perimage under restricted function. Under restricted function. Okay, since f of closure of b of x of delta is continuous and ये क्या है, continuous है, and if x belongs to V, there exists a function gamma, gamma less than equals to delta. Okay, such that for all y belongs to closed ball b of x comma gamma comma f of y belongs to V. The perimage under the perimage under f of closure of closed ball bx comma delta of V contains x. V क्या contain करता है, V contains x and is open in the subspace topology of subspace topology of closure of closed ball bx comma delta. Okay, and what is the last function? Neighborhood in original space. Neighborhood in original space. The set the set b x comma gamma is a subset of b of closed ball of v of x comma delta is an open neighborhood
hood of x in capital X, since f of b, if bar b or closure of closed ball b x comma delta is continuous. Okay, and function of b comma x comma gamma is a subset of v. Okay, and the conclusion and final part is, therefore for any x belongs to capital X and any open set V is a subset of Y containing fx, there exist an open neighborhood u equals to closed ball of b of x comma gamma is a subset of x of x such that f of u is a subset of v. So this can be proved that f is a continuous on x. Okay, so this is the final solution. So ऐसे ही बहुत सारे ट्रिक्स को फॉलो करने के लिए आप सब्सक्राइब करिए सोर्सेस क्लासेस को और हमारे साथ जुड़े रहिए. ठीक है, आज के लिए इतना ही. हम लोग एमस्टैट सब्जेक्टिव पेपर का सॉल्यूशन कर दिए हैं. फिर ले आएंगे आपको एमस्टैट ऑब्जेक्टिव पेपर का सॉल्यूशन. अगर आपको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस नंबर पे डायरेक्ट डिटेल सॉल्यूशन मतलब इस सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट करिए और एडमिशन के लिए भी इस नंबर पे कांटेक्ट करिए. हमारे यहाँ पर आईएसआई के सभी कोर्स में अभी डिस्काउंट चल रहा है नेक्स्ट ईयर का एग्ज़ाम के एडमिशन के लिए. ओके, सो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.